Hi everyone, welcome back to the channel. Hope you're doing extremely well. This is Abhishek Goel and welcome back to a new video. And this video is all about software development engineering test role. So let's quickly go into the slide. So इस वीडियो में मैं software development engineering and test engineering role के ऊपर focus करूँगा. And let's go and see the points for discussion. So we'll discuss what is an SDET. SDET is basically a software development engineering and test. Who is this video for? What is the difference between the SDET role, SDE role, and the QA role? How things work in the product-based companies? What do SDETs exactly do in a product-based companies or a service-based companies? What is automation? Importance of object-oriented programming for SDET and SDE? Design patterns, and we'll discuss a scenario. And finally, we'll discuss the main point, which is how to crack an SDET interview. So let's start with who is this video for? This video is for the college students and the manual tester who are planning to switch to automation role as an automation tester or as a SDET role or for a SDET role, right? So take a scenario for college students. College में क्या होता है ना, हम placements के preparation करते हैं. कंपनीज आती है हमारे कॉलेज में फॉर सर्टेन रोल, डेवऑप्स रोल, एसडेट रोल, एसडी रोल, डेटा एनालिस्ट रोल, डेटा इंजीनियर रोल एंड मेनी अदर रोल्स इन द टेक इंडस्ट्री, राइट. सो उस टाइम हम ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं कर रहे होते हैं कि मुझे तो यही रोल चाहिए, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस होता नहीं है कि कौन सा रोल हमारे लिए फिट बैठेगा. ठीक है, टू हैव इंटरेस्ट इन सर्टेन डोमेन लाइक मशीन लर्निंग और साइबर सिक्योरिटी, दैट इज़ अ सेपरेट पार्ट. बट टू डिसाइड योर रोल एज अ कॉलेज स्टूडेंट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. सो हम सारे कंपनीज़ में बैठते हैं, सारे जो रोल्स के लिए इंटरव्यूज़ आते हैं हम सब में बैठते हैं और उन सारे रोल्स के लिए हम इंटरव्यू देते हैं, वट एवर इट इज़ फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर और एसडेट और डेटा इंजीनियर. सो वी सिट फॉर ऑल द इंटरव्यूज़, राइट. और जो भी हमारे लक में होता है या हम क्रैक कर पाते हैं, उस कंपनी में हम जाते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर रोल. और उस कंपनी में जाने के बाद वी अंडरस्टैंड कि कौन से रोल में क्या काम होता है, राइट. सो कॉलेज के टाइम में हमारे हाथ में होता नहीं है, बट दिस वीडियो विल गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट दैट व्हाट एग्जैक्टली एसडेट्स डू and is it a good job or is it a good role, that or QA or DevOps role. Okay, so let's discuss about the difference between the SDET, SD and QA. So SD is the software developer who is basically responsible for all the feature development. वो code लिखेगा, वो feature develop करेगा, and for that feature develop, SDET is responsible to write the automation classes, automation test, ताकि उस feature को test किया जा सके. And QA is the QA engineer is responsible to manually test it. But यहाँ पे एक catch है. क्या होता है ना, कंपनी टू कंपनी वैरी करता है. कुछ कंपनीज होते हैं जहाँ पे SDET रोल और QA रोल सेम होता है. लाइक द SDET इज परफॉर्मिंग द मैनुअल टेस्टिंग एज वेल एंड ही इज़ ऑल्सो डूइंग द ऑटोमेशन पार्ट. बट देयर आर सर्टन कंपनीज जहाँ पे SDET रोल और QA रोल अलग होता है. एंड देयर इज़ अ वेरी लार्ज डिफरेंस इन द सैलरी. मतलब सैलरी गैप बहुत ज़्यादा होता है बिटवीन द SDET एंड द QA, बिकॉज QA इज़ जनरली नॉट इन्वॉल्व्ड इन प्रोग्रामिंग और कोडिंग, while SDET is involved in writing the automation classes, coding and supporting the developer, right. So that is the difference. तो वो company to company vary करता है. I'll give you an example. D-Shaw में SDET and QA अलग अलग roles है. फिर कुछ कंपनीज़ हैं जैसे सिस्को में SDET QA अलग अलग नहीं है, SDET रोल है. सिमिलरली अलग अलग कंपनीज़ के लिए अलग अलग होती है, राइट. सो दैट इज़ व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द SDET, SD and QA. Moving forward, how things actually work in the product based companies, right. So take an example. मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, मतलब बाकी कंपनीज़ में अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं. सो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताता हूँ कि सपोज कस्टमर प्रपोजेस अ फीचर कि कस्टमर यूजेस आवर प्रोडक्ट, राइट. सो कस्टमर प्रपोजेस अ फीचर कि मुझे आपके प्रोडक्ट में ये सारी चीज़ें चाहिए एंड they propose an idea to the product manager, right. Or suppose another scenario could be that we came up with a new offering to the customers कि हम अपने प्रोडक्ट में ये इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, एंड दिस कुड बी अ गुड यूज केस फॉर आवर कस्टमर्स. So what does product manager do is product manager discusses and defines the requirement for that particular feature, right. उसके बाद क्या होता है, product manager, engineering manager, developer and the software developer engineering and test, ये चारों मीटिंग में आते हैं एंड दे डिस्कस द रिक्वायरमेंट्स. इंजीनियरिंग मैनेजर सेट करता है तुम्हारे टाइमलाइंस एलोकेशन, लाइक द डेवलपर्स एंड द SDET रिक्वायर्स the time required to build that particular feature. So developer is assigned to build the feature and subsequently SDET is also assigned to ensure the quality throughout the testing and automation, right. तो क्या होता है कि जब भी कोई नया फीचर डेवलप होना रहता है, राइट,
तो हैंड इन हैंड चीज़ें चलती हैं। यहाँ पे developer is involved in developing that particular feature. Hand in hand, the SDET is involved in writing the test plan for that particular feature. So after that, जब developer ने code build कर दिया है, code is completely done. After that, SDET will check if automation is feasible or not. If automation is feasible, and if the feature is part of the existing product, or as you can say कि वो feature एक सब feature है एक particular बड़े फीचर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो उस केस में क्या होता है कि वी ऐड दोज टेस्ट केसेस और वी ऐड दोज ऑटोमेशन टेस्ट इन आवर एग्जिस्टिंग ऑटोमेशन सूट or automation class. And suppose there's a product or there's a feature which is completely from scratch, so SDET role is to create an automation class from scratch and write all the automation test cases for that particular feature. So what do exactly SDETs do? Suppose the developer has done with the feature development. Now the task of SDET is to write the testing framework for that and write all the automated test cases for that and integrate it with the CI/CD pipeline. So what all tests basically that particular SDET has to do for this AI chatbot, right? First would be the UI testing, because the AI chatbot will have a UI, so we can verify the UI using the Playeright, or we have to do the mobile testing if we have mobile app for the particular chatbot. API testing for all the chatbot API calls happening. Performance testing, can chatbot handle thousands of users? तो उसके लिए हम JMeter यूज़ कर सकते हैं. इंटीग्रेशन टेस्टिंग कर सकते हैं. चैटबॉट वर्क्स वेल विथ लॉगिन और प्रोडक्ट फ्लोज और नॉट. फंक्शनल टेस्टिंग हो गया कि बॉट रिप्लाइज एक्सपेक्टेड और नॉट, मतलब जो चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं बॉट से वो रिप्लाई कर रहा है कि नहीं. और स्पेसिफिकेशन टेस्टिंग बेसिकली इट्स अ सिंपल कि प्रोडक्ट मैनेजर के जो रिक्वायरमेंट्स उन्होंने मेंशन किए थे डॉक्यूमेंट में, आर वी फॉलोइंग दोज रिक्वायरमेंट्स और कवरिंग दोज रिक्वायरमेंट्स विद दिस पर्टिकुलर फीचर. सो दिस इज़ व्हाट इट इज़. सो अभी मैंने इतनी बार ऑटोमेशन नाम यूज़ किया, राइट? सो व्हाट इज़ एग्जैक्टली ऑटोमेशन, मतलब एसडेट के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं. ऑटोमेशन इज़ बेसिकली राइटिंग कोड टू टेस्ट द कोड. सो मैनुअल टेस्टिंग में क्या होगा कि एक ही फीचर को आपको बार बार टेस्ट करना होगा, एंड इट इज़ नॉट स्केलेबल, राइट? सो ऑटोमेशन एंश्योर्स कि हम फास्ट, रिपीटेबल और रिलायबल वैलिडेशन कर पाएँ बार बार सेम फीचर का, एग्जिस्टिंग फीचर का. अगर कोई नया फीचर आ रहा है तो वापस उसके automation test लिख के we can do that, right? So in the context of SDET, what we can understand is feature develop हो रहा है, SDET thinks कि कौन सा पार्ट स्टेबल है जिससे हम ऑटोमेट कर सकते हैं. So SDET लिखता है स्क्रिप्ट्स एंड फिर उसको for the UI automation and for the API automation को टेस्ट करते हैं automatically, and it integrates with the CI/CD pipeline, take it as Jenkins or TeamCity. So TeamCity is integrated, and every time we want to test that particular feature, existing feature, not the change, existing feature, then we just trigger that automation suite, right? So this is what SDETs do. Okay, let's take an example कि हमारी कंपनी एक AI chatbot launch करना चाहती है. So PM कहते हैं we want to launch a chatbot to assist our users, right? So the engineering manager, the developer and the SDET साथ में बैठते हैं and then understand the requirement and the scope, right? And dev starts designing and building the feature. Based on that, उसके साथ साथ parallelly SDET starts creating the test plan for it. Functional testing plan, the API tests will be required, the UI test and the integration test. So after that, the code is built by the developer. SDET verifies कि what all features of that particular AI chatbot is feasible for automation and what all features can only be tested manually. So all the features are first of all verified manually. After that, whichever feature are feasible for automation, so वो सारे automation framework में जाते हैं. So the SDET is responsible to create automation framework for that, and on top of it उसके बाद उसके automation test लिखता है and framework update होता है, उसमें test add होते हैं, and then we integrate it with the CI/CD pipeline. And each time we want to test that particular feature, so we run or trigger that particular CI/CD pipeline. So this is what it is. Okay, so you got the context, right? What do exactly SDETs do? So feature development के बाद SDET का काम start हो जाता है with the test plan, right? After that automation framework बनता है, वो test लिखता है. So test, और यहाँ हम automation के बारे में बात कर रहे हैं. So automation में क्या क्या tests cover होते हैं exactly? If the particular feature has a UI, since we are taking an example for AI chatbot, right? So UI testing की बात करते हैं तो UI testing के लिए you can use Selenium or Playwright.
फ्रंट एंड को टेस्ट करने के लिए कि चैटबॉट का यूआई सही से काम कर रहा है कि नहीं. अगर उसका कोई मोबाइल ऐप है तो वी कैन यूज़ APM टू टेस्ट द मोबाइल चैट इंटरफेस. API टेस्टिंग कर सकते हैं चैटबॉट की जितने भी APIs बैकएंड में हैं, आर दे वर्किंग करेक्टली और नॉट. सो हमारे ऑटोमेशन फ्रेमवर्क में वी कैन एक्चुअली यूज़ रेस्ट एश्योर्ड टू बेसिकली ऑटोमेट ऑल दोज फीचर्स. एंड परफॉर्मेंस टेस्टिंग कर सकते हैं कि हमारा चैटबॉट 1000 या मिलियंस ऑफ यूजर्स को हैंडल कर सकता है कि नहीं. सो यूजिंग JMeter वी कैन क्रिएट मॉकर्स एंड वी कैन सेंड द मॉक लोड्स टू द पर्टिकुलर चैटबॉट एंड टेस्ट दैट कि वो लार्ज यूज़र के लिए फिजिबल है कि नहीं है. इंटीग्रेशन टेस्टिंग कर सकते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द पर्टिकुलर चैटबॉट, लॉग इन और द प्रोडक्ट फ्लोज आर वर्किंग करेक्टली और नॉट. फंक्शनल टेस्टिंग हो गया कि बॉट replies expected way or not. मतलब suppose we built our bot to solve the customer queries, right? So we need to test that what all functionalities we required from that particular bot is the if it is working as expected or not, right? And the last is the specification testing. So PM ने एक certain requirements दिए हैं that should be part of chatbot, right? So it's a task of the SDET, even for the engineering managers or developer, to check with the product manager even while building or testing that particular feature, जब तक वो prod में गया नहीं है, कि document के according काम हो रहा है कि नहीं. So what all things is feasible to add in that particular AI chatbot, right? Moving forward, let's talk about the most interesting topic जो बहुत ज़्यादा important है for both the developers and the software development engineering test engineers. So which is object oriented programming. To build a feature, the developer should be capable enough to write a clean, modular and reusable code, right? Because what if we want to add an add-on feature later in that particular feature, right? So for that, we shouldn't touch the existing code. Instead, we should be able to extend a particular class, right? So for that, we should know what OOPS is, and we should follow this 4 pillars of that particular OOPS, which is abstraction, inheritance, and encapsulation. So suppose take an example. We have 100 APIs जिसे हमें टेस्ट करना है. So एक base टेस्ट क्लास होगा. So जितने भी common logic होंगे like authorization token, headers. Suppose I have to test. Take an example. Suppose I have to test a UI feature. So every time to enter that particular dashboard, I have to log into that particular UI, right? So why to write the login code multiple times, right? लॉगिन कोड हम एक जगह लिख सकते हैं एंड वी कैन कॉल दैट लॉगिन कोड मल्टीपल टाइम्स फॉर ईच एंड एवरी टेस्ट केसेस, राइट? सो दैट विल सेव टाइम एंड दैट विल मेक आवर कोड मोर मॉड्यूलेबल एंड स्केलेबल. सो दैट इज़ व्हाट इट इज़. सो हर एक टेस्ट केसेस को उसको एक्सटेंड कर सकते हैं एंड कोई रिपीटेशन नहीं होगा. एंड नेक्स्ट इज द कॉमनली यूज डिज़ाइन पैटर्न्स एंड टूल्स यूज बाय एसडेट, राइट? सिंगलेटन पैटर्न यूज़ होता है, एक ही वेब ड्राइवर इंस्टेंस पूरा फ्रेमवर्क में हो. एंड फैक्ट्री पैटर्न यूज़ होता है, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल या API क्लाइंट्स क्रिएट करने के लिए होता है. एंड बिल्डर पैटर्न मोस्टली यूज़ होता है फॉर कॉम्प्लेक्स पेलोड्स बिल्ड करने के लिए लाइक चैटबॉट का इनपुट JSON. स्ट्रैटेजी पैटर्न भी यूज़ होता है फॉर लॉगिन फ्लोज के लिए लाइक ईमेल्स के लिए गूगल एंड OTP एक्सेट्रा एक्सेट्रा. So there are some prominent tools, there are some hot tools which, so based on the current market scenario, there are some certain tools जो बहुत ज़्यादा important है for a SDET to know. अगर वो interview के लिए preparation कर रहा है then they should focus on upskilling themselves on these tools. First is the Playeright for UI automation. Basically अब क्या हो रहा है ना, market का condition ऐसा है कि now companies are looking for SDETs who can manage diverse portfolio, like they are able to manage UI automation, mobile automation and web automation, right? So recently क्या हुआ कि बहुत टाइम से Selenium यूज़ होता था for UI automation, but from few years like 3 to 4 years Playwright came into the picture. Playwright बहुत ज़्यादा popular हो गया. It is a open source platform managed by Microsoft. So UI automation के लिए Playwright यूज़ कर सकते हो, and for API automation you can use REST Assured, which is the most famous framework which is used for API automation. Mobile testing के लिए APM हो गया, then performance testing के लिए JMeter हो गया, एंड नॉर्मल टेक्स्ट एग्जीक्यूशन के लिए जब हम ऑटोमेशन फ्रेमवर्क बिल्ड करते हैं वी कैन यूज़ JUnit और TestNG फॉर ऑल द सेशंस एंड द टेस्ट एग्जीक्यूशंस. सो ये सारी चीज़ें होती है जो एक SDET को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? टेक एन एग्जांपल, आई विल गिव यू एन एग्जांपल कि UI ऑटोमेशन के जब भी इंटरव्यू होता है, राइट, जब भी UI ऑटोमेशन से रिलेटेड इंटरव्यू होता है दे मेंशन Playwright. So they'll give you a scenario. Suppose they'll ask you to open the Flipkart website.
फ्लिपकार्ट वेबसाइट तुम ओपन करोगे एंड they'll give you a scenario कि click on that particular cart, add that particular product in the cart and buy that particular product, right? So in that case the interviewer will ask you write a Playwright code to navigate from this location to this location in the user interface of that particular website. So for that you need to explain them verbally that this is what I'm thinking of and these are the locators which I'll use. So और बहुत सारी चीज़ें हैं जो Playwright से related होती हैं. So this is one of the example for UI automation जो Playwright use करके तुम explain कर सकते हो. And mostly मतलब most of the companies right now for UI automation are focusing on Playwright, even if they are in Selenium, so they are migrating it to Playwright. अगर और कोई test IAM एक है और एक UI automation के लिए, so they are migrating to Playwright. So Playwright is one of the most popular UI automation framework which is prominent in this industry right now. So what it takes to crack an SDET interview. So all the manual testers who are aspiring to become a SDET or भी कोई job role में हो नहीं हम trying to or preparing for a SDET interview. So these are the things, most common things which you should focus on. First is focus on Java or Python for PyTest, Java for TestNG. OOPS concept is very, very, very important. So there should be a strong command on Java and OOPS. Second is manual testing concepts. So when you're interviewing for SDET, right, you should know what all manual testing concepts are, like STLC क्या होता है, like software testing life cycle क्या होता है, test scenarios क्या होते हैं, edge cases क्या होते हैं. So ये basic concepts आपको आने चाहिए. Automation skills होने चाहिए for both UI and the API automation, backend automation भी आनी चाहिए and the UI automation भी आनी चाहिए. And you should have a good knowledge of the automation framework कैसे create करेंगे. So interview में the most common question will be एक scenario तुम्हें दे देंगे and they'll ask कि तुम इसका automation framework कैसे design करोगे and और इसको modular कैसे बनाओगे so that that particular framework is scalable for big product जिसमें हज़ारों API calls हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, right? And UI automation, one of the common question would be page object model use होता है to make UI automation modular. So that is what it is. And debugging, the one of the other question which would be debugging skills तुम्हारी कैसी है, how you are able to add loggers and check that particular code, or you are able to find the bugs in that particular system. So they will also judge or they'll ask you questions like how many bugs you have filed and what kind of bugs you have filed, critical कितने issues थे, etc, etc. So these are the common questions which are asked to SDETs in their SDET interview, right? So okay, so next is okay, so these are all things which I mentioned, right? You have to be focused on Java, Python, OOPS, strong command manual testing. Okay, so there are some few resources which you can explore for preparing for SDET interviews. Okay, so this is Tech with Jatin. इसने recently ही YouTube channel शुरू किया है and he has made some awesome content on SDET interview preparations. So there is something called API Automation Masterclass where he teaches how to build the API automation framework which I was talking about, right? Moreover, you can see he has some videos on interview experiences as well, how to build a resume for SDET. So there are a lot of content about SDET interviews, right? And if you want to learn Playwright, which I mentioned also, so this Naveen Automation Lab, he has some good content about all about SDET. And all the simple thing which you can do is just search for SDET or search for Playwright. So this guy SDET QA, he has also a good content on Playwright. Automation step by step, this is also a good content on Playwright. So similarly, you'll find all the tutorials for all the testing tools you should know if you're preparing for a SDET interview, right? So the base is a programming language, OOPS concept, and apart from that, all the testing tools you should have a good grip on. From my side, if you have any questions, please comment down below, and if you like this video or if you know someone who can get benefited from this particular video, share with them. Thank you so much for watching this video. Make sure you hit the like button, subscribe button, and subscribe karo. Thank you so much for supporting. Bye bye.